Hello guys, this is Farhat. Welcome back to my channel and welcome back to my another amazing video. So टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये लुक क्रिएट करने वाली हूँ एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेड मोनोटोन एज वेल एज इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक. मैंने ये ब्यूटीफुल सा लुक किस तरह से अचीव किया है ये जानना है तो आप मेरे वीडियो पे एंड तक बने रहें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. I have already done my skin care and मैंने स्किन केयर में ओनली टोनर अप्लाई किया है, गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर. एंड टुडे आई एम गोना अप्लाई दिस एलोवेरा जेल. नो मॉइस्चराइज़र नो प्राइमर बिकॉज ये मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर दोनों का ही काम करता है. सो आई एम यूजिंग दिस. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल, आलमंड फेशियल ऑयल. सो क्योंकि मुझे थोड़ा सा ड्यूई लुक क्रिएट करना है बिकॉज आज मेरा मन कर रहा है थोड़ा ड्यूई लुक सा क्रिएट करने का. तो मैंने ये ऑयल लिया है एंड इसे मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे. इस तरह से आपको ये ड्रॉपर आप इसके साथ बॉटल के साथ मिलेगा. आप इसे अच्छी तरीके से इस तरह से अपने फेस पे ड्रॉप कर लो. सब देख सकते हो ना शाइन हो रहा है तो थोड़ा ड्यूई जैसा लुक आएगा. So now today I am using this Maybelline का Fit Me foundation, tube foundation in the shade 128 warm nude. So it's a matte plus poreless foundation and ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे तरीके से ब्लेंड आउट करूँगी. लैक्मे का रोज़ पाउडर लिया है एंड इसे मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ. तो मैं यहाँ पे काजल पेंसिल ले रही हूँ जिसे मैं अपने आईब्रोज फिलिंग करूँगी और उसे शेप करूँगी. सो सब देख सकते हो आईब्रोज फिलिंग करने के बाद कितना डिफरेंस लगता है. तिलक की हेल्प से इसे अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी. अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है. सो मेरी आईब्रोज भी हो गई हैं एंड आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन हो गई हैं. M5A का फाउंडेशन ले रही हूँ क्योंकि एक शेड लाइटर में स्किन टोन से आ गया है तो मैं इसकी हेल्प से अपने अंडर आई एरियाज़ को कंसील भी कर लूँगी एंड अपने स्पेसिफिक एरियाज़ को हाईलाइट भी कर लूँगी. सो आई एम यूजिंग दिस छोटा सा फ्लैट ब्रश. सुना इसे सेट करने के लिए मैं सेम लैक्मे का रोज़ पाउडर लूँगी और इसे अच्छे तरीके से सेट कर लूँगी. मैं थोड़ी देर छोड़ने वाली हूँ थोड़ी देर रखने वाली हूँ. सो तब तक मैं अपनी फेस की कॉन्टूरिंग कर लेती हूँ. जैकलिन का पैलेट ले रही हूँ जिससे मैं ये ब्राउन सब शेड पिक करने वाली हूँ एंड कॉन्टूर करने वाली हूँ. अब ये कितने अच्छे तरीके से हाईलाइट हुआ है. देखिए बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट हो जाता है एंड आप जो कॉन्टूर करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से उभर के आता है आपके फेस पे.
ये रेड काइंड ऑफ रेड कलर पिक कर रही हूँ, आउटर पे डिपॉजिट करूँगी एंड देन ब्लेंड करूँगी। तो जब आप बहुत सारे कलर्स अपने आईज पे लगाते हो, देन इसे ब्लेंड करना वो एंड एक दूसरे को आपस में मर्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना बहुत ही हार्श लाइंस दिखते हैं। थिंक दिस थोड़ा गोल्डन वाला शेड आप अपने फिंगर की हेल्प से जितने इजीली लगा लोगे ना, next time using this Lakme Insta liner, which is my personal favorite. Using this Lakme iconic mascara. So my eye makeup is completed and पता नहीं थोड़ी लाइटिंग की वजह से कलर पॉप आउट नहीं हो रहा, मतलब सही से पता नहीं लग रहा, यू नो। ब्लशर आई एम टेकिंग दिस हाफ एंड हाफ का ब्लशर, मैं दोनों को मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ। Now Swiss Beauty का मेकअप फिक्सर, मेकअप लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स कि आपको ये लुक कैसा लगा एंड डू क्रिएट दिस लुक एंड टैग मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है देन डू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एज वेल। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज ओशनज़ैक। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो एंड हेल्पफुल रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, भर भर के लाइक करो गाइज एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो, या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड हिट द बेल आइकन, वो भी इम्पॉर्टेंट है ताकि नोटिफिकेशंस आपको इंस्टेंट आ जाए जब मेरी वीडियोस अपलोड हो तो। सो टिल देन टेक केयर, बाय।